Hello, good evening everyone. I hope I'm audible to you, right? Please let me know in the chat box. So today we are starting with the new chapter, which is nothing but some applications of trigonometry. There will be definitely 4 marker question based on this chapter. So it is a very important, and if you will check that weightage is very much, but the syllabus will correct. So we have to prepare this chapter very well. We just have to use some basic concepts from trigonometry and how can we use them for real life examples. Okay, so should we start? Before that, just let me know I'm audible to you all. Okay, so in this chapter, first of all, we see what is actually introduction for this. Obviously, आप सब देख सकते हो ये क्या है आपके सामने is nothing but the Mount Everest. Suppose आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, आप कर सकते हो क्या? बहुत बड़ा है ये तो पता है, बट व्हाट विल बी इट्स हाइट? हाइट अगर फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हैं? जो भी आपका बेस रहता है ना, बेस से आप पूरा ऊपर करते हो कंसीडर. सो वी कैन से दैट दिस इज अवर हाइट, बट आप मेजर कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मेजर इट? व्हाट डू यू थिंक? It is impossible to measure it with the help of measuring tape. Definitely not right. We consider correct रहेगा पर सेकेंड आप लेके जाओगे, बट इस वजह से तो मेजरिंग टेप का यूज करके तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपको करना तो है ही. सेकेंड थिंग जो आपके सामने है, इट इज अ वेरी केस, बट इट इज नथिंग बट द रिवर. Suppose you have to find what will be width of this river. What will be width of this river? Again, width मतलब ये रहना, ये तो भी ना, but how can we find? कुछ आप पे कंसीडर करेंगे. Again, it is difficult and impractical to measure it with the help of measuring tape. फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं इधर हम पूरा ऐसा लेके जाएंगे, बट आपको पता नहीं है डेप्थ कितना रहेगा, यहाँ से जाओगे. सो मेजरिंग टेप का यूज करना इट विल बी जस्ट इम्प्रैक्टिकल फॉर दिस केस. करेक्ट. Third example is again this. Obviously, everyone knows it is nothing but the Eiffel Tower. The same thing. How can we measure this one? What will be its height? Height is nothing but जो भी आपका बेस रहता है, बेस से आप पूरा ऊपर तक करोगे कंसीडर, बट एक्चुअल में आपको पता नहीं है. सो इट इज अगेन इम्पॉसिबल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप. मतलब विड्थ रहेगा या फिर हाइट रहेगी, जो भी फाइंड आउट कर सकते हो वो तो इजी था, बट यूजिंग मेजरिंग टेप ये अगर आप पूरा इसकी हाइट फाइंड आउट करोगे, विड्थ फाइंड आउट करोगे, देन ये पूरा इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा. बट फिर भी आपको करना तो है ही, राइट? आपको पता है कितना हाइट है, आउट एवरेज का कितना रहेगा, आप विड्थ का फाइंड आउट कर सकते हो. सो ये जो हाइट्स एंड डिस्टेंस आपको मिलेंगे लाइक दिस टाइप, we can use it, we can measure it using trigonometry. Okay, so we just have to see the few important terms. The first one is what is line of sight. The second one is horizontal line, and third one is angle of elevation. समझ में आ रहा है? ओके, देखो लाइन ऑफ साइड इज नथिंग बट जो आपकी साइड की लाइन रहेगी आप उसके हिसाब से बोलोगे. स्ट्रेट आपको रखना है, ठीक है? जो भी आपके साइड की लाइन है ये अगर आप स्ट्रेट कंसीडर करते हैं तो वो कुछ बन जाएगा. देन सी, अगर आप कंसीडर करते हो लाइन ऑफ साइड के बारे में, यू कैन सी दैट व्हाट हियर if he is to consider, he is observing the curve which is in the line of sight of this point. Getting this one? ये बन जाएगा ऑब्जर्वर, ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट. लाइन ऑफ साइट इज नथिंग बट ये आप देख सकते हो, राइट? सेकेंड थिंग, line of sight is nothing but the imaginary line is connecting the eye of the observer and the object. Eye of the observer and the object. So this imaginary line is called as line of the sight. Now, second thing, suppose now the boy is observing door of a tree house. Obviously,
अगर डोर आपको ट्री हाउस से देखता है तो थोड़ा उसे उसकी साइड पर करनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर आप लाइन ऑफ साइट कंसीडर करते हो तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर के से आप ये इमेजिनरी लाइन बनाओगे, इट विल बी योर लाइन ऑफ साइट। Getting this one? I hope you are getting this. Second thing, suppose he just observing this beautiful flower here. So, in this case, what will be the line of sight? We will just consider the imaginary line from eye of the observer to the object. So, this imaginary line is known as a line of sight. We are studying chapter केस में आपको ये जो फोर टर्म्स है ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है अपना। नाउ नेक्स्ट ये बन जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट, मतलब ऑब्जर्व का आपका फिक्स था, मतलब एक केस में आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था वो कब, सेकंड केस में आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था ट्री हाउस का डोर, एंड थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था ये जो आपको मिल रहा था वो वन केस, राइट। नाउ सपोज अगर वो एप्पल की तरफ देखता है, मतलब ये बन जाएगा ऑब्जर्वर एंड दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट। I hope you're getting this. Now, next one is angle of elevation. Elevation का मतलब सबको पता है। See, this line passes through the eye of observer and the parallel to the ground. आपको पैरेलल क्यों कंसीडर करना है, बिकॉज आगे जाके आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यूज करते हैं उस केस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल कब मिलेगा, हम ये कंसीडर करते हैं ग्राउंड एंड ग्राउंड पैरेलल जो भी आप कंसीडर करोगे। Angle of elevation is nothing but the line passes through the eye of observer and is parallel to the ground. So it is known as a horizontal line. Obviously, ये जो line रहेगी, it will be parallel to like the ground. Now, suppose the boy is observing the top of the tree. The boy is observing the top of the tree. तो इस केस में आप क्या कंसीडर करोगे, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी इज नथिंग बट वो जो ऑब्जर्वर था उसके से आपने जो कंसीडर की थी व्हिच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। बट नाउ इफ ही इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ ट्री, इट मींस दैट ये रहेगा ऑब्जर्वर, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, तो लाइन ऑफ साइट आपकी क्या रहेगी, लाइन ऑफ साइट इज नथिंग बट आप ये कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो भी आपका ऑब्जर्वर है उससे आप इमेजिनरी लाइन बनाने वाले, करेक्ट। सो दिस विल बी ऑब्जेक्ट। गेटिंग दिस वन? समझ में आ रहा है? इसे आप क्या बोलते हो, इट इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ साइट। देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या कंसीडर करनी है, ऑब्जर्वर के आई साइड से जो भी आप ऑब्जेक्ट तक लाइन बनाओगे विच विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड एंड लाइन ऑफ साइट तो पता है आपको। देन ये जो आपका रहने वाला है एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। समटाइम्स ऊपर देखना पड़ता है, इसके लिए आप एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करोगे, समटाइम्स आपको नीचे देखना पड़ता है, सो उस केस में आप एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करोगे। Okay, now everyone can hear that boy के eyesight से अगर आप line draw करोगे then it will be a horizontal line, but the case is that he is observing the flower on the ground, मतलब ये रहेगा object, अगर ये आपका रहता है object तो आप क्या consider करते हो, line of sight will be this, correct, it will be a object, ये बन जाएगी आपकी line of sight। तो इस केस में एंगल आपको कैसे मिलेगा, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ सेगमेंट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप क्यों कंसीडर करोगे, बिकॉज नीचे दिखता है, अगर ऊपर जाना है तो एलिवेशन, नीचे देखना है तो फिर ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट इट, अगर ये फोर कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है एंड जो भी कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट क्यूब concepts based on trigonometry, उस हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो भी ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर के आई साइड से आप ग्राउंड के लिए पैरेलल लाइन निकालेंगे, तो ये रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन।
Suppose now the bird will be an object. So what we have to consider, the line of sight is nothing but ये बन जाएगी आपकी line of sight, right? And line of sight only और इसके बीच में जो भी कुछ आपको एंगल मिलता है, it will be angle of elevation. एंड सिमिलरली हमने वो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कंसीडर किया था वो भी समझ में आ रहा है आपको। अगर ऊपर की है तो फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इफ ही इज द डाउनवर्ड देन इट विल बी अ लाइन ऑफ साइट। गेटिंग दिस वन क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप के जब भी आपके पास रहते हैं कुछ क्वेश्चन, सबसे पहले आपको उसकी रॉ डायग्राम बनानी या फिर रफ डायग्राम बनानी, मतलब आपको कंसीडर क्या करना है, देखो और द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज सपोज जो भी आपके पास क्वेश्चन रहते हैं वो इधर टॉवर से रिलेटेड रहेंगे या ट्री से रिलेटेड रहेंगे या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड रहेंगे। सो ऑल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स shall be considered that a line segment perpendicular to the ground, because अगर 90 डिग्री मिलता है तभी आप वो बाकी के सारे रेशियोज यूज कर सकते हो, करेक्ट? गेटिंग दिस वन? नाउ सेकंड वन इज दैट all heights of objects such as towers, trees, buildings shall be considered as line segment perpendicular to the ground. Okay. Then all heights objects such as towers, trees, again कुछ भी consider करो, then height रहेगी जो आप consider करने वाले, its height will be always perpendicular to the ground. Second, the height of the observer is neglected if it is not given in the problem. Suppose अगर आपको ये करना है that the boy is standing on the ground, तो जो भी कुछ इसकी हाइट रहती है डेफिनेटली इस हाइट से वो तो नेग्लिजिबल है, बट क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है that boy is standing on a building which is supposed that meter from the ground, तो उस केस में आपको कंसीडर करना है। अदरवाइज जो भी कुछ रहता है what this point का रहता है we'll just consider it as a single point. Okay, just try to solve वो first question. Question क्या है देखो, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Hello, good evening. Then find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. क्या करना है सबसे पहले चेक करते हैं, ये आपको कुछ पोल मिल रहा था, क्वेश्चन क्या गिवन था, यहाँ पे रहेगा से करने वाला है पूरा क्लाइंट, राइट? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको गिवन के सिर्फ है, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी टाइम आप पूरा निकाल नहीं सकते, बट जब भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं आपको कुछ ना कुछ रफ डायग्राम बनानी है सो दैट आपको आइडिया सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट? क्वेश्चन क्या था एंड क्या करें, देखो ये रहेगा सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope. Is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Then we have to find height of the pole. ठीक है, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है। एक और चीज आपको क्या बोली थी देखो, if the angle made by the rope with the ground, मतलब रोप एंड ग्राउंड के बीच में जो भी कुछ आपको एंगल मिलेगा इट विल बी ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये बनेगी आपकी सिर्फ डायग्राम, राइट? ये आप कंसीडर करोगे सपोज AP विल बी दैट पोल एंड C to A रहेगा आपका लेंथ ऑफ रोप व्हिच इज गिवन एज 20 मीटर एंड एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द रोप इज गिवन एज 30 डिग्री। So what can we use here? We know the value for AC means in the right angle triangle आपके पास hypotenuse की वैल्यू है, आपके पास 30 डिग्री गिवन है एंड आपको AB फाइंड आउट करना है। So suppose height of the pole will be H. Observer is at point C. So measure of angle C is given as 30 डिग्री। आपको क्या करता है, कुछ अपोजिट साइड आपको फाइंड आउट करनी है,
but we know that using all the trigonometric ratio, opposite side upon hypotenuse, which is nothing but OH. OH ये आपका केस था साइन का, भूल रहे हो ना सारे? देखो साइन मतलब आप क्या कंसीडर करते हैं? साइन इज नथिंग बट ओ एच, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. इफ यू हैव टू कंसीडर cos थीटा, तो cos के लिए आप क्या कंसीडर करोगे? ए एच, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड फॉर tan आपको ओ ए, दैट इज अपोजिट अपॉन ए, ये याद रखना था. तो अब हम ये कंसीडर करते हैं फॉर दिस एंगल सी, opposite side is nothing but AB and hypotenuse is given as AC. So we can say that sine 30, because sine is nothing but OH, that is opposite side, which is nothing but AB, upon AC. बट साइन 30 का वैल्यू क्या रहता है? वो टेबल जो हमने किया था, याद आ रहा है सबको? साइन 30 की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको? साइन 30 इज नथिंग बट 1/2. So 1/2 equals to AB, which is given as h because it will be height of that pole, and AC is given as 20. AC is given as 20. Hence, twice h can be written as 20, so that you will get the required height of the pole will be 10 meter. It will be 10 meter. If you want to make a screenshot, just put it. Now, next picture. Raj, we are getting this one? Okay. Now, next one. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. The inclination of the string with the ground is given as 60 degree. Inclination मतलब ऊपर, ये कुछ आपको एंगल दिया है. Then find the length of string, assuming that there is no slack in the string. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन रीड करो एक बार. So what can I assume here? A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. मतलब काइट की हाइट अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको ये कल कंसीडर करना है. सो वी कैन से दैट ये जो भी हाइट रहेगी इसके बारे में आपको बोला था. नेक्स्ट थिंग इज दैट इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज गिवन एट 60 डिग्री. मतलब ये एंगल रहेगा आपका 60 डिग्री का. सो दिस विल बी द रफ डायग्राम फॉर वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ये आपको फाइंड करना है, राइट? सो एज अ रफ डायग्राम वी कैन कंसीडर दिस वन. सपोज टाइप का जो रहेगा ये आप कंसीडर करोगे जिस पॉइंट पे आपने ग्राउंड पे किया है टाइप, वो पॉइंट बन जाएगा आपका सी. ओके, सो by the given question what know that AB represents the distance of the kite from the ground. काइट का ग्राउंड से टोटल डिस्टेंस बन जाएगा आपका 60 मीटर का. AC will be the length of string. AC will be the length of string and measure of angle ACB is given at 60 degree. Measure of angle ACB is given at 60 degree. So what we can say about this triangle? In triangle ABC, in triangle ABC, आपको क्या पता है? अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है. अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, राइट? ओके, आज एक्सरसाइज विच ऑप्शनल जो रहेंगे वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बट जो सिर्फ एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करना है. ठीक है? So again, opposite and hypotenuse का केस है. Opposite and hypotenuse is nothing but sine बन जाता है आपका. Sine is nothing but opposite upon hypotenuse. So we can say here sine 60 equals to AB upon AC. Sine 60 equals to AB upon
AC, right? But value of AB is already known to you. Also sin 60 का भी वैल्यू पता है आपको. sin 60 उस टेबल से अगर आप कंसीडर करोगे तो फर्स्ट रो की 4 ये आपको मिल जाएगी, which is nothing but root 3 upon 2. AB is given as a 60 meter. AB given as a 60 meter and AC will be here जो आपको फाइंड करना है. So using this, what can you say? AC equals to 2 times 60 upon root 3. That is, AC will be 120 upon root 3. AC will be 120 upon root 3. Done up to this? Clear हो रहा है? यही तो आपको फाइंड करना था. But upon root 3 ये तो आप कर नहीं पाओगे. So what we have to do? We just have to rationalize the denominator. Hence आप numerator denominator को root 3 से करोगे multiply. So ये root 3 into root 3 बन जाएगा 3 on this. So final answer of AC will be 40 times root 3. Suppose question में अगर given रहेगा value of root 3, then you just have to put that root 3 as a 1.73. So AC will be 40 into 1.73, which is nothing but 69.2. Okay. बच्चे अगर आप लॉजिकली ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझते हो तो कोई भी आंसर क्वेश्चन आप कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. बट फर्स्ट एज अ फाउंडेशन, फर्स्ट एज अ बेस्ट सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका है उसमें से सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने. एक बार वो लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो कौन सा यूज करना होता है, साइन कब करना है, कॉस कब करना है, लेंथ क्या रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्या कंसीडर करोगे, तब सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे. ओके फाइन. Should we move on for the next question? Now, ये पिक्चर ऐसा है. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. अब height कंसीडर करते हैं इसका मतलब क्या है, ग्राउंड से एलिवेशन का, ग्राउंड से उस स्लाइड का हाइट तक कंसीडर करोगे. इफ इट इज बिलो 5 मीटर तो उसके लिए आप करोगे 1.5 मीटर and it is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and the incline at an angle 60 degree. Incline at an angle 60 degree to the ground. Then what should be the length of slide for each cases? आपको गिवन क्या है, देखो आपको फर्स्ट केस में अगर आप स्लाइड का हाइट कंसीडर करते हो फ्रॉम ग्राउंड लेवल, देन ये आपको गिवन था 1.5 मीटर एंड सेकंड थिंग इज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द स्लाइड जो गिवन था आपको 30 डिग्री. राइट, मींस ये बन जाएगा आपका फर्स्ट टर्म रहेगा. सिमिलरली अगर आप सेकंड थिंग कंसीडर करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज द थिंग हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड जो आपको मिलेगा 3 मीटर. ये कुछ रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री के लिए, ये आपको मिलेगा फॉर 60 डिग्री. राइट. सो अगेन क्वेश्चन क्या है आपका, अगर आप ये एज अ रफ डायग्राम सिर्फ चेक करते हो तो आपको कुछ इसमें से मिल जाएगा. फॉर टू राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल के अपोजिट साइड आपके पास थे दोनों केसेस में, आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. दैट्स इट. सो एंगल से अपोजिट व्हिच इज नथिंग बट OH का केस. तो OH मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो आपको सिर्फ साइन का यूज करना है. अगर आपको साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 60 का वैल्यू पता है तो आप ये झट से कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll just talk about the right angle triangle ABC, which is nothing but we have to find the length AC, which is equals to length of a slide for the children below 5 years, which is nothing but AC. It will be x meter. Similarly, length of a slide for the children
which is nothing but PM, will be y meter. So height of the first slide is given as 1.5 meter. Height of the second slide is given as 3 meter. So, for small children, or you can consider here for right angle triangle ABC, what can you say? C का opposite side आपको पता है. So for C, opposite side will be 1.5 meter. Hypotenuse x है जो आपको find करना है. So opposite upon hypotenuse is nothing but value of sine. आपको sine ratio consider करना है. So sine 30 can be written as opposite side, which is nothing but AB upon AC. But sine 30 is nothing but 1 upon 2. So 1 upon 2 equals to AB, which is nothing but 1.5 upon AC, जो आपको x consider करना है. Hence x can be written as 1.5 into 2. So x will be 3. Then up to this, clear हो रहा है ये? देखो एक बार. Done? Then next देखिए. नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, जो आपने किया था फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, अभी आपको द चिल्ड्रन के लिए कंसीडर करना है. Yes, now we have to comment about the second right angle triangle, which is nothing but PQR. So for the children in right triangle PQR, in right angle triangle PQR, what do you have? R is nothing but 60 degree. We have the side opposite to R. We have the side opposite to 60 degree, which is nothing but 3 meter. Hypotenuse is given as y. Again opposite upon hypotenuse, मतलब आपको sin का use करना है. But इस केस में angle of elevation, which is nothing but slide and ground के बीच वाला angle, आपको मिल रहा था 60. So here sin 60 equals to opposite side, which is nothing but PQ upon PR. बट साइन 60 का वैल्यू क्या रहता है, मतलब फर्स्ट रो में फोर्थ वैल्यू, सबसे फर्स्ट 0, देन 1 upon 2, then 1 upon root 2. Sin 60 will be root 3 upon 2. Okay, PQ is nothing but 3 meter, and for PR we put y. Hence, 3 times y equals to 6. Cross multiplication consider किया. So y will be 6 upon root 3. Again, अभी आपको डिनोमिनेटर का वैल्यू रूट 3 ऐसा कुछ मिल रहा था. So what you have to do? You just have to rationalize the denominator. So y equals to 6 upon root 3 into root 3 upon root 3. That is, y will be 6 root 3 upon 3. 3 ones are, 3 twos are. Hence, the length of the slide for elder children will be 2 root 3 times. If you want, then you can put the value of root 3 as a 1.7. So y equals to 2 into 1.73, which is nothing but 3.4746. So as a final answer, you just have to rewrite the length of slide for children below 5 years. जो हमने पिछले वाले केस में फाइंड आउट किया था, it will be 3 meter, and the length of a slide for the elder children will be 3.46 meter. If you want to make a screenshot, just go. Okay. Now, the next question. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30. Angle of elevation of top of a tower from a point on the ground, right? Then we have to find height of a tower. जो भी आपको दिया है वो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करने की कोशिश करो. टॉप ऑफ अ टावर इज नथिंग बट आपको कंसीडर करनी है हाइट ऑफ अ टावर.
ये अगर रहता है टॉप ऑफ द टावर तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ द टावर एंड दिस विल बी लाइन ऑफ द साइड, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइड. So we know that height of the observer is regular. So we can consider a point on the ground like this. Then it is a point on the ground is 30 meter away, is 30 meter away from the ground of from the foot of a tower. So ये कुछ आपको 30 meter गिना है. Top of a tower आपको find out करना था. And second thing is that we have the value for angle of elevation, which is nothing but 30. So आपको ये चेक करना है ऑब्वियसली. आप ये बोलोगे ना जब भी टावर आप कंसीडर करते हो, जो हमने फर्स्ट फ्यू केसेस में देखा था दैट अगर आप हाइट ऑफ अ टावर कंसीडर करते हो तो या ट्री का केस कंसीडर करो, जो भी कुछ है हमेशा we have to consider that it will be perpendicular to the ground. It will be perpendicular to the ground. So what can we say for the right angle triangle ABC? Distance of the foot of a tower from a point will be 30 meter. आपको फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द टावर, जो आप कंसीडर कर सकते हो इंच. अब आपके पास क्या है देखो, आपको डी टेस्ट करना है. ये 30 डिग्री पता था, तो अगर आप 30 डिग्री के रिस्पेक्टिव बोलते हो मतलब मेजर ऑफ एंगल सी के बारे में आप चेक करोगे तो सी के लिए अपोजिट वैल्यू आपको फाइंड करनी थी बट एडजेसेंट वैल्यू गिवन था. अपोजिट आपको करनी है फाइंड, which is nothing but we can say that opposite आपको करनी थी find and adjacent था given. So O and A केस रहेगा. इस टाइप के कौन से रहते हैं आपके पास, कौन सा रेशो आपको यूज करना है, करेक्ट, which is nothing but tan this opposite upon adjacent. So the ratio of opposite side to the adjacent one is as a tan. So what you can say, tan 30 equals to opposite upon adjacent. That is AB upon BC. अब tan 30 का वैल्यू क्या रहता है, tan 30 is nothing but 1 upon root 3 equals to AB will be H and BC we can consider it as a 30. BC will be 30. Hence, considering the cross multiplication, what can you write? Root 3 times x is equal to 30. Therefore, x will be 30 upon root 3. Again, denominator में root का term आपको मिल रहा है, so you will rationalize this denominator. It means that we'll multiply the fraction by root 3 for numerator and denominator, so that the numerator will be 30 times root 3 and denominator will be root 3 into root 3, which is nothing but 3. So 3 ones are 3 tens are, you will get h as a 10. That is, h will be 10 times root 3 का वैल्यू 1.70 प्रूव कर सकते हो. Therefore, h will be 17.3. So height of the tower will be 17.3 meter. Okay. Should we go for the next question? Now, the question is that a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. क्वेश्चन क्या दिया गया है ये सबसे पहले अज्यूम करते हैं. सपोज ये रहेगा ट्री बट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म ये ट्री हो गया है डाउन एंड द ब्रोकन पार्ट, सपोज अगर ए बी रहता है आपका पूरा ट्री, then broken part हम consider करेंगे the point where tree breaks will be at point C. So ये जो आपको केस मिलता है मतलब C to B जो रहेगा, C to B जो रहेगा उस केस में जो top of tree था it will touches the ground. मतलब ये कुछ आपका रहेगा obviously जो BC का डिस्टेंस रहेगा उतना ही CD का डिस्टेंस मिलेगा. ये क्लियर हो रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है.
अब नेक्स्ट मैंने को क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन foot of a tree and to the point where the top touches the ground is 8 meter. Foot of a tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Then find the height of the tree. Height find out करना मतलब AC plus BD BC आपको find out करना है. But BC is same as CD, right? So we have to find out value of this. Obviously, broken part जैसा रहेगा उतना ही हमने यहाँ पे consider किया. So here and BC and CD will be same. So this will be our diagram. What you have to do here? आपको find out करना था AB का केस, but आपको मिल रहा था सिर्फ इतना ही part. We know that BC represents the length of the broken part. Hence, AC will be the length of unbroken part. अगर आपको length of a tree find out करनी है, जो भी height रहेगा total tree का, वो आप कैसे बोल सकते हो? Length of the broken part plus length of the unbroken part. But length of the broken part is same as CD. We have to find out what will be the value for AB, but we know that AB is nothing but AC plus BC. So for angle D, what can you say? Opposite side will be AC. Opposite side will be AC, and we have to find the value for CD. मतलब opposite side, adjacent side आपको given था. Adjacent side is nothing but 8 meter. सो आपको इस साइड का रेशियो चेक करना है जहां पे आपको अपोजिट का भी वैल्यू चाहिए, एडजेसेंट का भी केस चाहिए. इट इज नथिंग बट ओ ए मतलब हम क्या कंसीडर करने वाले थे, tan का केस. करेक्ट. सो वी नो दैट रेशियो ऑफ अपोजिट साइड to the adjacent side is nothing but tan. So we can say that tan 30 equals to opposite side upon adjacent. Hence, tan 30 will be AC upon AD. But we know that tan 30 is nothing but 1 upon root 3. ये सारे वैल्यूज आपको कहाँ से मिल रहे थे, जो हमने टेबल याद रखा था वहां से. करेक्ट. नाउ 1 upon root 3 equals to AC upon AD is nothing but AD का वैल्यू पहले से गिवन है आपके पास. AD is nothing but 8 मीटर. So AC upon 8. Hence, AC will be 8 upon root 3. Again, आपको क्या करना है for b? AC का वैल्यू आपको 8 upon root 3 मिल रहा था. आपको क्या पता है, अगर ये पूरी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है तो फिर आपको BC भी फाइंड आउट करना होगा. अभी सिर्फ आपको AC की वैल्यू पता चलिए. अब आपको क्या चेक करना है, CD का. सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल CAD, अगर आप D के बारे में चेक करते हो, D के लिए एडजेसेंट साइड आपको पता है एंड आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है. सो एडजेसेंट साइड विल बी AD and hypotenuse will be CD. So we just have to recall that ratio which includes adjacent side and hypotenuse. Which includes adjacent side and hypotenuse too. So in the triangle CAD, what can you say that AH is nothing but cos. So cos 30 equals to adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. But we know that cos 30 is nothing but root 3 upon 2. cos 30 का वैल्यू टेबल से आप लिख सकते हो. इट विल बी रूट 3 अपॉन 2. AD इज नथिंग बट 8 मीटर. आपको CD का वैल्यू फाइंड करना है. CD is same as BC. Hence, we can say that root 3 times BC is equal to 16. So only BC will be 16 upon root 3. क्या किया हमने, सबसे पहले tan रेशियो का यूज करके AC फाइंड आउट किया. अगेन using cos theta आपने CD फाइंड आउट किया. but we know that CD is same as BC. So if you have to find height of a tree, that A to B अगर आपको करना है find, तो आप क्या बोलोगे, height of a tree is nothing but AC plus BC. But AC हमने find किया था as a 8 upon root 3 and BC was 16 upon root 3. So we have two fractions where denominators are same. So we can add numerators. So the answer will be 24 upon 3. But again, we have to rationalize the denominator. So we can say that 24 upon root 3 into root 3 upon root 3.
So 24 times root 3 upon 3. 3 ones are 3 eights are. Hence, length or height of a tree will be, or length of the unbroken part plus broken part equals to 8 times root 3. But again, we can put value of root 3 as the 1.73. So 8 times 1.73. Its answer will be 13.84. It will be a height of, it will be height of. Okay, completed after this. समझ में आ रही है? Next. Now, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से आपको कुछ भी नहीं क्लियर होगा, तो हमेशा सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो। रफ तो रफ डायग्राम, बट आपको बनानी है। ओके, सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब आप ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर, ये ऐसा कुछ कंसीडर करना है। That transmission tower is fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Then you have to find the height of the tower. Okay. See, point of the ground is nothing but a negative symmetry. Bottom of the tower क्या रहेगा? Bottom of the tower is nothing but height of tower and top of the tower. अगर आपको height of top of tower consider करना है, then this is nothing but height of tower plus height of that transmission tower. Correct? But we know the of this building. क्या दिया गया था आपको? Height of building is nothing but 20 meter. So we can height of is at 20 meter. Top observation is neglected, hence we consider the point of ground will be here. Then line of sight आपको कितने मिलेंगे? आप वर्क कैसे? We have two angles of elevation. First one is जो भी ग्राउंड पे आपका पॉइंट है वहां से आप बॉटम ऑफ टावर का कंसीडर कर रहे हो, एंड सेकेंड केस आपके पास क्या है? इसी पॉइंट से आप टॉप ऑफ टावर के लिए कंसीडर कर रहे हो। सो ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट फर्स्ट वन, बट फर्स्ट के लिए आपको गिवन था 45 डिग्री एंड 60 डिग्री किसके लिए रहेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर। सो दिस वैल्यू विल बी 60 डिग्री। Now we have two right angle triangles जिसके लिए आपको दो अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएंगे, बट फॉर दिस ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स रहने वाला है, मतलब पॉइंट का फुट ऑफ बिल्डिंग से जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी सेम फॉर बोथ केसेस, and obviously if we are considering a building then the building is nothing but it will be perpendicular to the ground. So we have to find height of a tower. आपको सिर्फ ये फाइंड करना है, ठीक है? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने किया था, we have a this type of diagram where AB represents the height of a building which is given as a 20 meter and BC represents the height of a transmission tower जो आपको फाइंड करना है। Then we know that BC is nothing but AC upon AB, but AB का वैल्यू आपको पहले से पता है, which is nothing but 20. It means that for finding out the value for BC, once you can calculate the value of AC, then 90% part तो done हो जाएगा. Now, second thing, A to D is nothing but आपको क्या मिलेगा? Point of the ground to foot of building the total distance. So, in right angle triangle BAD, what can you see? In right angle triangle BAD, we have angle of elevation and we know the value opposite. We know the value opposite to the. So, opposite angle आपको पता है.
एडजेसेंट एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो बिकॉज अपोजिट एंगल था भी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अगर आप कंसीडर करते हो व्हिच इज नथिंग बट OA, but OA is nothing but ratio of opposite side and adjacent side is nothing but tan. So tan 45 because angle of elevation was 45 degree. Hence tan 45 equals to opposite side upon adjacent. Opposite side upon adjacent. But we know tan 45 is nothing but 1. Okay. So 1 equals to AB is nothing but 20. So 20 upon AB. We can say that AD equals to 20. कौन सा रिपीट करना है ये पूरा केस यहाँ तक समझ में आया आपको। सी आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपके पास सेम राइट एंगल ट्रायंगल है बट उस केस में ये जो एरिया था इट विल बी फिक्स्ड। सो आवर फर्स्ट फोकस इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी लेंथ ऑफ एडी। सो फॉर दैट एडी आपको क्या पता था, दैट एबी का वैल्यू पता है। सो एंगल अपोजिट सॉरी सर एंगल की अपोजिट जो साइड है वो आपको पता था। अपोजिट एंड एडजेसेंट इज नथिंग बट ओ ए, मतलब आपको tan का यूज करना है। सो tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सब करने के बाद आपको एडी मिल जाएगा 20 मीटर। सो नाउ आपको करना था फाइंड एसी। एसी इज नथिंग बट एबी प्लस बीसी। उस केस में आपको क्या मिला है चेक करते हैं। AC equals to AB plus BC. So AB is nothing but 20, BC is nothing but X. वो आप करोगे क्या consider now why we took tan 45. See आपको जो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे ना वो सिर्फ AB के बारे में था। तो अप टू B पॉइंट अगर आप चेक करते हो तो अप टू B पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको इतना ही कंसीडर करना है। ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये। आप जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था उस केस में अपोजिट एंगल ऑफ ए बी यूज करना है। तो बी तक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहेगा इट विल बी ओनली 45 डिग्री। गेटिंग दिस वन, ये ठीक हो रहा है। अगर आपको कंसीडर करना होता सी का केस, अभी आप ही बोलोगे आपको एसी करना है, ए टू सी मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको ये पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, एंड 60 degree. So now for the next case आपको कंसीडर करना था for the right angle triangle ADC. For the right angle triangle ADC सिर्फ फोकस करो D पे। D के लिए क्या क्या पता है, D के लिए एडजेसेंट एंगल जो है, D के लिए जो एडजेसेंट साइड है इट इज नोन यू, एंड अपोजिट साइड के बारे में कुछ आपको चेक करना है। सो अपोजिट साइड रहेगा D के लिए AC and adjacent side will be AD. So again we have to recall such ratio which involves opposite side and adjacent side, which is nothing but OA का case. So OA which is nothing but O upon A is equals to tan. So tan 60 degree can be written as AC upon AD. Tan 60 degrees AC upon AD. But we know that tan 60 is nothing but root 3. And AC का वैल्यू अभी आपको क्या मिला था, AC is nothing but AB plus BC, that is 20 plus X. So we can use here root 3 equals to AC is nothing but 20 plus X divided by AD का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, it will be 20. करेक्ट। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हो तो आपको क्या मिलेगा 20 टाइम्स रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। hence x will be 20 times root 3 minus 20. You can take that 20 as a common from it. So in the bracket there will be root 3 minus 1. But root 3 का वैल्यू आप क्या कर सकते हो 1.73। अब तक पहली बार हमने किया था राइट। So root 3 is nothing but 1.73 minus 1. So x equals to 20 into 1 minus 73 minus 1.73 minus 1 is nothing but 0.73. Hence value of x will be, अगर ये multiplication consider करते हो 2 times 73 will give you answer as 146.
there are total 2 digits after a decimal point and we have only one zero. So what we will do? ये decimal point एक प्लस से RHS पे हो जाएगा शिफ्ट. So हम इधर कंसीडर करेंगे it will be 14.6. Then after this कितना क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? आपको वही तो फाइंड आउट करना था. X is nothing but height of a transmission tower. So we can say that height of a transmission tower is 14.6 meter. Then अगर ये समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, तो से चैट बॉक्स में शेयर करो. जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. क्लियर हो रहा है? आपको करना क्या है, देखो जो भी कुछ गिवन रहेगा सबसे पहले रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो एंड जो भी केसेस रहते मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज करना है तो वो आपका ओ एच बन जाएगा. गुड, वेरी गुड. अगर आपको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज करना है तो वो आपका कॉस बन जाएगा. एंड अगर आपको ओ ए मतलब जो कि हमने इधर किया था ओ ए इज नथिंग बट tan. पता क्या हमें चाहिए, ये जो ओ एच ए एच ये सब रहता है वो वाले केसेस. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो आपका टेबल रहता है. ओके, टेबल का अगर आप फर्स्ट रो अच्छे से याद रख सकते हो तो बाकी का सब कुछ आप इजीली कर सकते हो. Should we go on for the next question? Done? See, a statue 1.6 meter tall stands on a top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree. ठीक है, मतलब angle of elevation given है. And from the same point, angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Then find the height of pedestal. मतलब अभी आपका केस क्या था, जो जस्ट हमने कंसीडर किया था बिल्डिंग का वैल्यू पता था, बिल्डिंग के ऊपर टावर रहने. इस केस में क्या है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू रहने वाला है. राइट, सी इस टाइप का रहेगा कुछ. लास्ट केस में हमने क्या किया था, ये पूरा केस में आपको बिल्डिंग का वैल्यू पता था एंड टावर के लिए फाइंड आउट करना था. इस केस में डिफरेंस क्या है, आपको ये वैल्यू पता है स्टैचू का, आपको पेडेस्टल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो देखो चेक करते हैं. द स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल. सो ये बन जाएगा 1.6 मीटर का. ये वैल्यू पता नहीं है वो आप कुछ फाइंड आउट करेंगे एज इट इज. हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड. हेंस जो एंगल ऑफ एलिवेशन आप कंसीडर करोगे आपको 2 पॉइंट्स के लिए कंसीडर करना है. फर्स्ट क्या है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज नथिंग बट आप ये लाइन कंसीडर करोगे जो ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया था 60 डिग्री. नाउ सेकेंड केस क्या है, स्टेल के लिए at the same point angle of elevation of the top of pedestal will be 45 degree. Then you have to find this. देखो चेक करो इसी टाइप से कुछ रहेगा. ए बी बी सी ए डी सब कुछ क्लियर हो रहा है. 45 डिग्री आपका क्या रहेगा, मेजर ऑफ एंगल ए डी बी विल बी 45 डिग्री and measure of angle ADC will be 60 degree. Then given जो केस था कंसीडर करते हैं. Let the height of it be h and statue of height of statue is given as 1.6 meter. Hence पूरा तो सब कुछ मिलेगा. So in the right angle triangle BAE, in right angle triangle BAE, what can you say? ये कुछ आपका है 45 डिग्री का. आपको क्या पता है, देखो अपोजिट साइड इज नथिंग बट AB and AD will be adjacent one which is nothing but OA का case. So OA मतलब tan. OA will be tan. So ratio of opposite side upon adjacent is nothing but tan and this angle of elevation is given as a 45 degree. Hence, what you can say tan 45 that is tan this is equal to OA मतलब opposite upon adjacent. So opposite will be H, adjacent will be X. And we know that tan 45 is nothing but 1. So tan 45 equals to H upon X. Because ये वैल्यू आपने H कंसीडर किया था, it is nothing but X. ये X क्या है आपका, पेडेस्टल के फुट ऑफ
से आप पॉइंट ऑफ जरूर जो निकाल देते हैं उसका टोटल रहेगा आपका डिस्टेंस. सो वी नो दैट x and h will be equal. x and h will be equal. ये आपको यहाँ से मिला. बट आपको जो इंटरेस्ट है आपको ये पूरा फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो व्हाट वी कैन से नाउ we'll consider the whole triangle. In right angle triangle CAD we'll just focus on D. D के बारे में आपको क्या पता है? D के अपोजिट साइड क्या रहेगा आपका AC. अपोजिट साइड आपको मिलेगा AC and we know that AC is nothing but AB plus BC. ये रहेगा अपोजिट साइड. एडजेसेंट साइड will be X. मतलब अगेन आपको डील करना है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट which is nothing but ratio of opposite side upon adjacent is nothing but tan. So tan 60 will be AC upon AD. Tan 60 will be AC upon AD. जैसे tan 45 का वैल्यू 1 रहता है वैसे ही tan 60 का वैल्यू √3 रहता है. वो अगर टेबल आप इजीली रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. सो tan 60 देखो tan के लिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज कौन कौन से रहते हैं. सबसे पहला आप वैल्यू कंसीडर करते हो tan 0 का 0. देन tan 30 will be 1 upon √3. tan 45 हमेशा अच्छा वाला आंसर which is nothing but 1. tan 60 is √3 and tan 90 is not equal. यूजुअली ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी रेशियोज यूज करने पड़ते हैं वो साइन कॉस टैन के ही रहेंगे. वो भी साइन 30 और कॉस 30 और टैन 30 या फिर साइन 45 कॉस 45 टैन 45 और साइन 60 कॉस 60 टैन 60. Hence √3 equals to AC is nothing but AB plus BC. So it will be H plus 1.6 and this is given as X. Okay. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करने के बाद आपको क्या मिलेगा √3 टाइम्स x इक्वल्स टू h plus 1.6. √3 times h is equal to h plus 1.6. But from equation 1 we can replace x by h because we know that x and h are equal. So √3 times h is equal to h plus 1.6. Hence √3 minus h will be 1.6. If you will take h as a common sum, then its value will be h times √3 minus 1 is equal to 1.6. Hence h will be 1.6 upon this. But we know that डिनोमिनेटर पे आपको कुछ स्क्वायर का टर्म मिल रहा था. अगर डिनोमिनेटर पे स्क्वायर का टर्म अगर सिंगल स्क्वायर रूट रहता है तो फिर आप रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं. अगर ये ऐसा √3 minus 1 इट मींस दैट डिनोमिनेटर पे आपको टू टर्म्स मिल रहे हैं. तो उस केस में रैशनलाइजेशन कंसीडर करने के लिए आप क्या करोगे कॉन्जुगेट से करोगे मल्टीप्लाई. सो कॉन्जुगेट कंसीडर करना है मतलब क्या है जो आपके पास डिनोमिनेटर पे है एज इट इज आपको कंसीडर करना था बट वहां पे सिर्फ प्लस साइन लेते वही आप न्यूमरेटर में भी कंसीडर करोगे. ओके दैट इज 1.6 upon √3 plus 1 into √3. So at the denominator you will get 1.6 into √3 plus 1 whole divided by √3 square minus 1 square which equals to 1.6 upon 2 into √3 plus 1. So 1.6 upon √2 is nothing but 0.8. So h will be 0.8 into √3 plus 1. You know the value of √3 as well. √3 is nothing but 1.7. So 1.73 plus 1, it will give you answer as a 2.73 times 0.8. You just have to consider the multiplication and multiplication consider करने के बाद डेसिमल के आगे टोटल आपको 1 2 3 दैट इज डेसिमल के आगे आपको 3 डिजिट्स चाहिए. सबसे पहले सिर्फ रेगुलर वे से आप मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करो and after that right side से 1.3 plus a छोटे decimal point देंगे. So you will get the value of h which is nothing but height of a pedestal. It will be 2.18. If you want to take a screenshot, just go. Done. समझ में आ रही है?
इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस आपके पास है इस चैप्टर में, या तो सॉल्व एग्जांपल, अदरवाइज एक्सरसाइज में से जो वो है उतने सारे। इफ यू विल गो थ्रू द ईच एंड एवरी क्वेश्चन सिली नीटली, अगर आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। सेकेंड थिंग, वेटेज फॉर दिस चैप्टर इज मोस्ट 4 मार्क्स। वर्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली पूछते हैं एंड आप इजीली लिख सकते हो। ओके, अगेन देयर विल बी टू एंगल्स। The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 30 meter high, then find the height of building. देखो कुछ इस टाइप से है आपके पास। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and same that is आपको कंसीडर करना है। ठीक है, सपोज ये रहेगा आपका टावर, ये रहेगी आपकी बिल्डिंग। तो फर्स्ट केस में क्या कंसीडर करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द फुट ऑफ, राइट, इट विल बी 30 डिग्री। मतलब ये ऐसा कुछ आपको कंसीडर करना है, ऑब्जर्वर रहेगा यहाँ पे। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिला था, एंगल ऑफ एलिवेशन में भी 30। सेकेंड केस में आप क्या कंसीडर करने वाले हो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का फुट, ये पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पे। सो इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर तक ये जो भी आपकी लाइन ऑफ साइड रहती है, ये लाइन ऑफ साइड ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल चलती है। ये समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली टावर कंसीडर करो या फिर बिल्डिंग कंसीडर करो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब वो 90 डिग्री आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन इजीली यूज द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड वन मोर थिंग इज गिवन टू अस, tower is 30 meter high, so you have the height of tower as well. So आपको फाइंड आउट करना था what will be height of building, कर सकते हो, चेक करो, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देयर विल बी टू राइट एंड ट्रायंगल्स इन विच जो बीसी रहेगा वो सेम ही है, बेस ऑफ टू राइट एंड ट्रायंगल्स विल बी सेम ही। यहाँ पे अगर कंसीडर करते हो तो 30 मीटर आपको कुछ मिल रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल सी हियर, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ये जो आपको सी एंगल मिल रहा था इट विल बी 60 डिग्री। एंड व्हाट डू यू नो, वो 60 डिग्री की अपोजिट साइड आपको पता है, मतलब अपोजिट अगर आपको होती है पता, एंड जो कॉमन पार्ट रहने वाला है इट इज नथिंग बट एडजेसेंट टू इट। सो अगेन ओ ए का केस है, ओ ए इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, opposite upon adjacent is nothing but tan. So tan 60 is given as AB upon BC. Tan 60 is given as AB upon BC. But we know that tan 60 is nothing but root 3. So root 3 equals to AB is given as 30 meter. So AB, which is nothing but 30 upon BC. Hence BC will be 30 upon root 3. Again, डिनोमिनेटर पे कुछ रूट का टर्म है, नहीं चलेगा, तो फिर क्या करना है आपको, रैशनलाइजेशन। सो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3, यू कैन राइट BC इक्वल्स टू 30 upon root 3 into root 3 upon root 3. So it will be something like this. So 3 ones are 3 tens are. So we can say that BC equals to 10 times root 3 meter. BC equals to 10 times root 3. Okay, done. Now आपको फाइंड आउट करना है सीडी के लिए, मतलब सीडी या डीसी जो भी कुछ आप कंसीडर करो। सो फॉर दैट नाउ वी कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल बीसी या फिर डीबीसी।
in which C is the right angle one and आपको पता है measure of angle B will be 30 degree. So for this what do you know? 30 degree के लिए adjacent side है वो आपको पता है. So for this angle adjacent angle आपको पता है, opposite side आपको find out करने की. Opposite side is nothing but CD and adjacent side will be BC. जो अभी हमने just find out किया था, it will be 10 times root 3. So opposite upon adjacent is nothing but tan. So tan 30 will be opposite upon adjacent, that is CD upon BC. But tan 30 is nothing but tan 30 क्या रहता है आपका 1 upon root 3. So 1 upon root 3 times BC upon BC का वैल्यू क्या था आपका 10 times root 3. So simplifying this, we just consider cross multiplication. Hence, DC will be 10 times root 3 upon root 3. So root 3 will get cancelled. DC will be 10 meter. यही तो आपको करना था. समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? Done up to this. So up to now, we haven't seen any question which contains that angle of depression. Okay, check. Next question. See. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. Which is 80 meter wide. From a point between them on the road, from a point between them on the road, the angles of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Then find the height of the poles and the distance of the point from the poles. इनके बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना था सो दैट उस पॉइंट से अगर आप ये एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करते हो तो किसी जगह पे आपको 80 डिग्री कंसीडर करना है, किसी जगह पे आपको 60 डिग्री कंसीडर करना है. हेलो हेलो बड़ी ओके. इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी दैट जो भी पोल्स आपके पास थे उसकी हाइट सेम मिलने वाली है एंड द रोड इज 80 मीटर वाइड. मतलब ये डिस्टेंस आपको पता है. सपोज इट विल बी अ पॉइंट जहां से आप वो एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करेंगे सो दैट एट लाइन ऑफ साइट फॉर द फर्स्ट वन विल बी दिस एंड सेकंड वन विल बी दिस. सपोज इट विल बी 60 डिग्री एंड ये कुछ बन जाएगा आपका 30 डिग्री. यहाँ तक ठीक हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. सो यही डायग्राम एज इट इज आपको एज अ रफ डायग्राम करके बनानी है एंड आपको फाइंड आउट करना था तो फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है ये जो वैल्यू रहेगा ठीक है एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू पॉइंट्स. कोई बात नहीं आपके पास अभी और भी टाइम है. फाइनल एग्जाम किया बहुत अच्छा सा कर सकते हैं. ओके सो गिवन केस क्या था h का वैल्यू रहेगा सेम. ये टोटल डिस्टेंस आपको पता था 80. सो वी कैन कंसीडर दैट सपोज इफ AE विल बी x. अगर आप फर्स्ट पोल से ये पॉइंट का डिस्टेंस x कंसीडर करते हो तो फिर EC कितना बन जाएगा. टोटल था 80 उसमें से x क्या हमने माइनस. सो वी कैन से दैट EC विल बी 80 माइनस x. EC will be 80 minus x value. So next point क्या है अभी आपको given क्या है. If we are talking about the right angle triangle BA, आपके पास क्या था आपके पास angle of elevation है उसके बाद adjacent का भी कुछ केस था and opposite का भी वैल्यू है आपके पास. If we are talking about measure of angle AEB, opposite side is H and adjacent side is AE. So again OE का केस. So ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास रहता है जिसमें अपोजिट साइड भी इन्वॉल्व हो एंड एडजेसेंट साइड भी इन्वॉल्व हो. Correct. It is nothing but tan. So we can say that tan 30
equals to opposite upon adjacent OA, which is nothing but opposite upon adjacent. But AB हम consider कर रहे थे as a tan 30 is nothing but 1 upon root 3. So we can say that 1 upon root 3 equals to h upon x, because adjacent जो side है तो आपको मिल रहा था. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करने के बाद यू कैन राइट x equals to root 3 times h. b हेलो हेलो ओके. तो x का तो वैल्यू आपको मिला है, मतलब अभी जो फर्स्ट एंगल के बारे में हम कंसीडर कर रहे थे वो हो गया खत्म. नाउ जस्ट फोकस ऑन द सेकंड वन. नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल BCE, अगेन इन विच आपके पास एंगल के लिए अपोजिट साइड है, एंगल के लिए एडजेसेंट साइड आपको पता है. So we can use it. If we have to consider opposite upon adjacent, we know that the ratio is known as the tan theta. But here theta is nothing but 60 degree. So tan 60 can be written as opposite side upon adjacent one. But opposite side is nothing but CD, adjacent side is nothing but EC. Right? So tan 60 is nothing but root 3. So root 3 can be written as CD will be h again, but EC will be 80 minus x. Hence, root 3 times 80 minus x equals to h. But already we have the value for x in terms of h. We have the value of x in terms of h. So we can write here root 3 into this, and the things h equals to root 3 times 80 minus x will be replaced by this value root 3 times h. So we can take h as the 80 times root 3 minus 3 times h. Hence h plus 3h, which is nothing but 4h, will be 80 root 3. 80 times root 3. Hence value of h will be 80 root 3 upon 4. So 4 1 4 20, and the answer of h will be 20 times root 3. But root 3 is nothing but 1.73. 1.73 into 2 अगर आप करते हो कैलकुलेट तो क्या मिलेगा आंसर आपको 34.6 मीटर. ओके, गेटिंग दिस वन. अब नेक्स्ट आपका टास्क क्या है, अगर x आपको मिल रहा था which is equals to 34.6, now you have to find the value of AE, because ये जो पॉइंट रहेगा दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पे ये आपको करना था फाइंड. So AE is nothing but x. AE is nothing but x. So AE x is nothing but root 3 times h. So we can say that root 3 times 20 times root 3 root 3 will get, well, is a 3. Hence 20 times 3, answer will be 60. तो अगर फर्स्ट के लिए मिला 60 तो सेकंड के लिए आपको मिलेगा 20, because it will be 80 minus x. Okay, correct बोला, very good. Okay, so value of x will be 20 here. It means that जो 3 questions आपको पूछे गए थे, the first one is height of pole, it will be 34.6. second, जो भी इस पॉइंट से आपको डिफरेंस मिलेगा, डिस्टेंस रहेगा, इट विल बी फर्स्ट से रहेगा ए बी से रहेगा 60 मीटर का, एंड सेकेंड पोल से आपको मिलेगा 20 मीटर का. इट विल बी अवर फाइनल आंसर. डन अप टू दिस, समझ में आ रही है? गुड, वेरी गुड. So here you have the next question, which is given as a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. मतलब अगर आप ये लाइन साइड कंसीडर करते हो, लाइन ऑफ साइड, तो लाइन ऑफ साइड एट ग्राउंड लेवल का जो भी कुछ रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा, राइट. सेकंड, from another point 20 meter away from this point on the line joining,
point foot of the tower, the angle of elevation of the top is 30. मीन्स अगर इस पॉइंट से आप लाइन ऑफ साइट करते हो कंसिडर, तो इसके लिए एंगल आपको मिलेगा 30. करेक्ट? क्या क्या पता है आपको? ये जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी 20 मीटर, 60 डिग्री 30, राइट? So we have to find the height of a tower and width of a canal. Height of a tower and width of a canal. कर सकते हो? ये कुछ आप h कंसीडर करो, ये बन जाएगा आपका x. So we have total two right angle triangles, one by one दोनों का यूज करो, आंसर आप निकाल सकते हो. If we are talking about the triangle ABC, ABC के लिए angle of elevation था 60 डिग्री, मिल गए, right? So ये अगर रहता है 60 degree, so we have the opposite one and adjacent one. So for C, opposite side will be AB, जो आप x consider करोगे, adjacent side will be BC, which will be x. So we can say that ratio of opposite upon adjacent is nothing but tan 60, which can be written as AB upon BC. But we know that tan 60 is nothing but root 3. Hence, root 3 will be h upon x. So considering the cross multiplication, we can say that h equals to root 3 times x. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम. अब आपको कंसीडर करना है राइट एंगल ट्रायंगल ABD. इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABD क्या पता है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा ये 30 डिग्री का. सो अगेन फॉर दिस 30 डिग्री आपके पास अपोजिट साइड है एंड एडजेसेंट साइड है. Adjacent side will be the whole BD, but BD is nothing but x plus 20 meter, right? So we can say that for this angle D, opposite side is AB and adjacent side is BD. So we can say that tan 30 equals to AB upon BD. Tan 30 equals to AB upon BD. But tan 30 is nothing but 1 upon root 3. 1 upon root 3 times h upon BD is nothing but 20 plus 6. So again, considering the cross multiplication, you can write x plus 20 as a h times root 3. But we know that h is nothing but root 3 times x. So we'll just replace this h by root 3 times x. Root 3 into root 3 will be 3 times x. Hence 20 will be twice x. So the value of x will be 10. So now you have the value of x, which is nothing but 10. Then आपको अभी h find out करना था, but h is nothing but root 3 times 10. That is root 3 into 10, and we know that root 3 is nothing but 1.17. So we can say that the height of a tower will be 17.3, and जो width हमने find out किया था, that is the length of this जो मिल रहा है आपको, it will be 10. Good, very good. क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है पूरा? मुझे कई बच्चों ने ये बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगना है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस विल जस्ट रिवाइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ट्यूसडे को एट 5:30 पे. ओके, एट 5. सो सी यू ट्यूसडे. बाय बाय.